Hi guys, I'm Chani and welcome to my channel. Thank you for tuning in again. So first and foremost, I decided that now on I'll be doing all of my videos in a Hinglish pattern. बोले तो I think I like to talk in both English and Hindi. तो आज हम bleach करने जा रहे हैं. Today I'm going to show you guys the best and the right way to bleach your face at home. बोलो तो अपन कैसे घर पे बैठ के bleach करें and salon से भी better results पाएं. मैं यूज़ करूँगी Fame Gold Ultra. So this is Fame Gold Ultra 3 Steps to Parlor Glow. Now cream और activator ये normally कोई भी bleach करो, कोई भी bleach लेके आओ, ये दो तो होते ही होते हैं. But this is the new trend, I think, which Oxy Bleach started. ऑक्सी ब्लीच वालों ने ये आपको अपना पोस्ट इन प्री ब्लीच आइटम देना स्टार्ट करा, विच इज़ वेरी फनी इफ यू आस्क मी बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड इट बिफोर एंड आई थिंक द रिजल्ट्स आर ओके. आई डोंट माइंड देम. तो अभी इन्होंने दिया है तो चलो लेट्स यूज इट. आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट आई हैव नेवर यूज्ड अ प्री ब्लीच क्रीम बिफोर टुडे. हमेशा नॉर्मल रिजल्ट्स ही आते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई और ब्रांड का लेके आ रहे हो and they don't give you a pre-bleach or something, then you don't have to worry. I'm just going to apply it all over my face. So let's get into bleaching 101. But the point is कि अगर आपका कोई भी बाल आएगा तो basically वो भी golden हो जाएगा. तो to avoid that आप just अपने बाल थोड़े से पीछे कर लो. Start with a clean face. Okay, I'm just going to use the cap of this bleach cream and take out some. I think this is little. I'm going to take some more. So I am just scooping out. Say, just remember that activator डालने के बाद में ये क्रीम थोड़ी light और fluffy हो जाएगी, तो ये थोड़ा increase हो जाएगा इसका amount. And now I'm going to show you guys how I use the activator. This spoon on the side, I am taking less than half of this. 30 seconds या 1 minute के लिए अपन इसको side में रखेंगे. Whatever area you want to use it on, don't come very close to the eyes. Not just because it is dangerous that it comes close to your eye. I mean, that is important. This area is really sensitive and एजिंग को थोड़ा एक्सिलरेट कर सकता है अगर आप इस एरिया में ज़्यादा कुछ भी केमिकल यूज़ करो तो. आई थिंक द लास्ट थिंग वुड बी नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फेस वॉश और एनीथिंग आफ्टर द ब्लीच प्रोसेस इज डन. सो विथ ब्लीचिंग यू आर अप्लाइंग सम केमिकल टू योर फेस, सो डोंट फॉलो इट अप विथ अनदर केमिकल. ब्लीच हो गया है, लीव इट एट दैट. कोई फेस वॉश कुछ नहीं करेंगे अपन. दिस हैज़ बीन सिटिंग फॉर लाइक अ मिनट एंड आई एम गोना स्टार्ट अप्लाइंग माई ब्लीच नाउ. मैं अपनी आँखों से एक थोड़ा डिस्टेंस दूर रखना पसंद करती हूँ. जैसे मैंने कहा, आँखें अनमोल हैं. सो मैं हमेशा अपने आँखों के पास के एरिया से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पूरे फेस पे सबसे थिक हेयर यहीं पर है. एनी पार्ट ऑफ योर फेस वेयरइन यू हैव thick hair, apply there first. Be careful of your eyebrows, your eyelashes, side locks, baby hair. And then keep it on for 10 minutes. Okay guys, so I have a full face of bleach. I'm going to keep it on for a good 10 minutes, 10 to 15 minutes. A good way to check your bleach if it's done is, जैसे कि मैंने स्टार्ट इस पार्ट से किया था क्योंकि मेरे यहाँ थोड़े थिक हेयर हैं. तो मैं क्या करूँगी कि 10-15 मिनट बाद आप थोड़ा सा इसको ऐसे रिमूव करके चेक कर लो कि अभी वो ब्राउन है कि क्या चल क्या रहा है. And I'm gonna wash it off with normal tap water. I just washed my face and this is the result. I can clearly see that my face is lit up and all glowing. So we have a post bleach cream which you can use on your face after the bleach, but it's not important. I have some aloe vera with me, fresh out of my garden, and this post bleach cream that
we got from the pack. I'm not going to use this. आप यूज कर सकते हो अगर आपको मन है तो. Literally just एक slit करके. I'm going to take the natural route and apply it. So that's all guys, I'm done for today and I'm really happy with the result of the bleach. But that's also because I have a really hairy face and that's not funny or something to be happy about. One more thing that I quickly want to address is that if you plan on getting your eyebrows or upper lips done or any facial hair removed, always bleach first and then go for facial hair removal. As of now, I have like bunch load of upper lip and eyebrow growth, but I'm waiting to be through with the bleach and then get it done tomorrow. So if you see some mustache happening, don't mind. That's all for today guys. I hope you liked the video and if you did, you know what to do. Subscribe karo.